Today we are discussing the suit for declaration of the property of the deceased intestate according to Islamic law and the other laws, because already we have discussed the how to get the succession certificate under Succession Act 1925, and this is the suit for declaration under Specific Relief Act 1877. So if a person dies intestate, then for the immovable property, this is very important, for the immovable property we are required to file the suit for declaration of the immovable property, including houses, plots, lands, agricultural land, whatsoever the property is, including shops. So for immovable property we need to submit the suit for declaration under Specific Relief Act, and for the movable property application for the issuance of the succession certificate under Succession Act 1925 section 372. So keep it in mind that after the death of your legal guardian, your parents, whatsoever the case is, you are required to file the suit for declaration for the immovable property while giving all the details of the property, and the shares will be calculated after deducting the share of the widow or the husband. First we will deduct the share of the widow, then the sons and daughters. So the shares will be divided into, if one share of the daughter, then 2 shares of the son. So this is the calculation according to the Muslim law. So keep it in mind that sharer is the widow, husband, wife, and residuaries are the daughters and sons in respect of the immovable property of the deceased intestate. Thank you very much. ये मैंने आपको सूट फॉर डेक्लेरेशन के बारे में आज बताना है, क्योंकि सक्सेशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। जब कोई मुतूफ़ी या किसी के वालिदैन बिला वसीयत इंतकाल फरमा जाते हैं दुनिया से, तो उनकी औलाद को जो हिस्सा मिलता है, बेवा को 1/8 पहले डिडक्ट होगा, उसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा और 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे। लेकिन ये तमाम जो सूट फॉर डिक्लेरेशन आप करेंगे वो सिर्फ जायदाद जो है वो गैर मनकूला के लिए होगा, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, मकान, ज़री ज़मीन, यानी जो जायदाद रुपया पैसा ना हो, क्योंकि रुपये पैसे की बात तो मैंने सक्सेशन एक्ट के वक्त आपको बता दी थी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए सक्सेशन एक्ट आप 1925 के तहत, और सूट फॉर डिक्लेरेशन जो जायदाद का है गैर मनकूला का, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत आपको करना है। और इसमें आपने तमाम जो है जितने भी उनके प्रॉपर्टी है उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना है, ताकि किसी गलती का एहतमाल ना रहे। थैंक यू वेरी मच।